Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. And the mighty Aussies have done it again. The mighty Aussies who always fight back have done it again. And इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ये सीरीज को अलाइव रखा है और ये सीरीज अब भी ड्रॉ हो सकता है। 2-2 होने की पूरी संभावना है ये सीरीज में। डोंट अंडर एस्टिमेट द ऑसीज एनी टाइम, क्योंकि और कोई भी टीम होती तो वो जब 2-0 डाउन हो जाते, और स्पेशली जब जैसा दिल्ली का टेस्ट हारा, जहां पे वो डोमिनेट कर रहे थे, 139 फॉर 7 कर दिया था ऑपोजिशन को 270 बना के, और पूरी तरह से वो जब डोमिनेट कर रहे थे, और वहां पे जब 113 रन पे कोलैप्स कर गए, जहां पे 28 रन पे 8 विकेट गिर गए, वहां से जो कोलैप्स किया वो मेंटली, कोई भी और टीम होती वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती, और 2-0 के बाद शायद वो गिव अप कर देती। पैट कमिंस उनके जो कैप्टन थे वो घर चले गए मदर्स के इलनेस की वजह से। तो after that, it was very, very difficult for Australia to come back. Even though Mitchell Stark team में वापस आए, but he was not completely fit. He was only half fit. And what a performance by Nathan Lyon, the all-time great. It can be really now debated whether Nathan Lyon is probably the greatest off spinner of this generation, or the greatest off spinner of all time, or is he certainly better than Ravi Ashwin? So all these questions, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. But overall, if you see Nathan Lyon and Ravichandran Ashwin, I think Ravichandran Ashwin के ज्यादा विकेट्स हैं, but Nathan Lyon has done it everywhere, on the tough pitches of Australia to South Africa, England. I mean, Nathan Lyon has just done it everywhere. And Ravi Ashwin, there are question marks that probably Ravi Ashwin has not done it everywhere. Certainly Ravi Ashwin has taken a lot of wickets in India, but Nathan Lyon has taken wickets in India also, and also across the globe. So that's been Nathan Lyon. And I have Pratik with me today. So Pratik, what do you have to say about this terrific comeback by Australia when they looked down and out? I mean, amazing. The series को अभी भी बचा के रखा हुआ है. So what do you have to say about that? Yeah, I'm very disappointed by Indian team management and the players. इतना अच्छा पकड़ थी टेस्ट सीरीज में, जैसा साउथ अफ्रीका में हमने देखा था। एक स्ट्रॉन्ग फन 1-0 के बाद हम सीरीज हार गए थे। शायद हो सकता है यहाँ भी हम बैक टू बैक 2 टेस्ट हार जाएं। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे प्रीव्यू में भी कि हमें लगा था यहाँ अच्छी विकेट मिलेगी, 400-500 रन देखने को मिलेंगे। बट इतना डिफेंसिव ऑप्शन के साथ गए और खुद पे बैकफायर हो गया। तो वेरी पथेटिक परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया एंड हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। Hmm. But like coming to the pitch again, like you said कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इंदौर है जहाँ पे डबल हंड्रेड्स बनते हैं, जहाँ पे बड़े सेंचुरीज बनते हैं। इवन द लास्ट टाइम न्यूजीलैंड आए थे तो आई थिंक रहाणे स्कोर्ड 188, और भी बैट्समैन ने सेंचुरीज मारा था। बट इसको इतना टर्निंग ट्रैक बनाने का, आई थिंक दिल्ली और नागपुर से भी ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाने का, आई आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट. Because already you are leading 2-0. Maybe they've just wanted to finish the series. That seems the only logic, but it backfired very badly, just like it did in Pune in 2017 and almost did in Bangalore. क्योंकि हमारे बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर, वो फुली आउट ऑफ फॉर्म है, वो खुद ही स्पिन नहीं खेल पा रहा है। कुनेमन जो कि ग्रेड 2 में खेलता था ऑस्ट्रेलिया में कुछ महीने पहले, I mean, the great cricketers were just saying he was playing for Queensland Twos, before 3 months back, and he just comes and he just tortures Virat Kohli. Virat Kohli playing, looking good but not able to score. And Rohit Sharma, I am shocked. Rohit Sharma still says कि we enjoy playing on these pitches, but the point is कि you are not always winning when you are playing on these pitches, and neither it is enjoyable to the crowd or to any cricket audience. Yeah, very much agree with your points. हम भले 2-0 थे, but they forgot their top order was not in form, और they were expecting कि उनको लोअर मिडिल ऑर्डर हर बार बेल आउट कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है, और इस टेस्ट में हमने वो देखा कि वो नहीं हो पाया। प्लस अक्षर पटेल का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत क्वेश्चनेबल था, जो इतना इनफॉर्म बैटर है, वो क्यों सिर्फ टेल के साथ बैटिंग करने आ रहा है।
Hmm. So there are a lot of questions to be answered, and there is a very good chance Australia can level this series, according to me. Yeah, so Akshar Patel obviously batting at number 9. But let's start from the beginning. First thing, KL Rahul getting dropped. I mean, finally cricket caviar की बातें लगता है इंडियन टीम तक पहुंच गई हैं और केएल राहुल को फाइनली ड्रॉप किया. सो इट वाज अ टोटली टर्निंग ट्रैक. पहले ही ओवर में रोहित शर्मा प्लेड अ माइंडलेस शॉट एंड उसके बाद एक पर एक वी सॉ हाउ कोहली गॉट आउट टू मैथ्यू कुनमन एंड अगेन मैथ्यू कुनमन टेकिंग दैट 5 wicket haul. Nathan Lyon picking up 3 wickets there. So, what do you feel that 109? I mean, you were at the ground actually when all this was happening. You were in the Holkar Stadium. So, what was your reaction and what was the crowd reaction when India got bowled out for 109? Yeah, it was very pathetic. हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे ताश के पत्तों की तरह टीम गिर जाती है वैसा लग रहा था. शिखर, sorry, I'll just be back. Yeah, so 84 for 7 and 109 all out. I mean, that was just shocking performance by the Indian team and pathetic performance. बट उसके बाद जो हुआ दैट वाज इवन मोर शॉकिंग बिकॉज अगर इंडिया 109 पे ऑल आउट होती है तो वी एक्सपेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया भी वैसे ही कोलैप्स करेगी बट दे डिड नॉट एंड दे प्लेड विद लॉट ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली स्टीव स्मिथ एक कॉस्टली नो बॉल जडेजा का. लोग बोल सकते हैं कि वो नो बॉल शायद कॉस्ट अस दैट मैच. बट द पॉइंट इज इफ यू मेक सच अ टर्निंग ट्रैक you know the advantage you have the advantage you have of your bowlers being able to turn the ball more than the opposition actually gets negated because everyone can turn the ball. Even Matthew Kuhneman जो एक ग्रेड लेवल ग्रेड क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया में जो कि एक क्लब क्रिकेटर है वो भी टर्न करा सकता है एज मच एज अश्विन. So it totally nullifies your ability to turn the ball, which is what makes Ashwin and Jadeja so such a standout performers because वो लोग ये बॉल टर्न करा सकते हैं. Uh, Second thing, I think Steve Smith as a captain, he was much more involved in the game, much more engaged with his bowling changes. I noticed a difference that Pat Cummins, when he captains, the bowlers usually get long spells, but not Steve Smith. He was frequently changing his bowlers, and I think the masterstroke was during Shreyas Iyer when he started actually playing some shots, or he got 27 of 27. He bought in Mitchell Stark because he knows Shreyas Iyer is scared of that शॉर्ट बॉल और वहां पे उसको उसने वो विकेट निकाल लिया. तो आई मीन दैट वाज जस्ट अमेजिंग कैप्टनसी फ्रॉम स्टीव स्मिथ. स्टीव स्मिथ वाज ब्रिलियंट. लाइक कुछ चीजें जो ग्राउंड पे दिखती है, आई नोटिस उसका इंटेंट बहुत ज्यादा था. स्पेशली फर्स्ट इनिंग के बाद विराट कोहली स्लिप्स में बहुत चुपचाप खड़ा हुआ था इस बार. ही वाज नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल. और स्टीव स्मिथ वहीं पे उस जगह खड़े होके इतना एक्टिव था. और फिर मैंने नोटिस किया जैसे जब डिसमिसल भी होता है तो पुजारा जब आउट हुए थे ओपनिंग पार्टनरशिप, तो पुजारा ने आने में ऑलमोस्ट 3 मिनट लगा दिए थे. पर जब लबुशेन नो बॉल पे आउट हुआ था जडेजा की, स्टीव स्मिथ वहां बाउंड्री पे ही खड़ा था और एकदम से आ गया, तो उसको वापस भेजा गया. तो उसका इंटेंट इतना अच्छा है और इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है उसका गेम में. ही इज सो इन्वॉल्वड एंड ही हैज डन अ फैबुलस जॉब इन दिस टेस्ट मैच. Yeah, I mean, as a captain, I feel certainly he's more involved into the game and he really wants to win the game. He can play a little bit dirty also. He's very, very motivated when he's a captain. Yeah. And Pat Cummins is great. I mean, I think someone said it that I think Steve Smith said it in the post-match presentation that every ball is an event in India. Yeah, So basically, definitely. every ball is an event, and Steve Smith is so clever to understand that game. And Australia, it's different. When you play in Australia, it's like you just wait, for the bounce or that seam movement to take the wicket. And Pat Cummins is good. He can, plug the bowlers, fast bowlers. But when you need the spinners, and even Nathan Lyon has admitted that he likes Steve Smith more as a captain. So that's really Yeah. amazing. एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ विराट कोहली से. मतलब
जडेजा आई थिंक फोर्थ आउट हुआ था, उसके बाद फिफ्थ विकेट मुझे याद नहीं आ रहा, कोई जो जो भी आउट हुआ था उसके बाद विराट कोहली का रिएक्शन दिखा रहा था कि वो बहुत अपसेट है, उसके सामने 3 विकेट्स गिर चुके हैं। तो ग्राउंड में ऐसा फील आ रहा था कि हाँ आज विराट कोहली एटलीस्ट 50-60 मारेगा, बट बिल्कुल फंसा हुआ था। क्या बकवास इनिंग्स थी, 22 रन 52 बॉल में। एंड इवन वर्स्ट इज सेकंड इनिंग्स में भी जब टीम को जरूरत थी तो वो कुछ नहीं कर पाया विराट कोहली, और 3 साल से यही चल रहा है। और मैं चेतेश्वर पुजारा की नॉक से भी ज्यादा खुश नहीं हूँ। 59 बनाए और 3 साल के लिए फिर से जगह बचा ली, और इतना कॉकी हो रहा था कि 75 रन डिफेंड करेंगे नेक्स्ट डे। भाई ऐसा नहीं चलेगा। एंड गिल का भी आई एम नॉट श्योर इफ विल प्ले द नेक्स्ट टेस्ट मैच, बिकॉज जिस तरह से सेकंड इनिंग्स में आउट हुआ है, इट वाज वेरी पैथेटिक। तो टॉप ऑर्डर वोज कंटिन्यू, एंड दिस विल सीरियसली हॉन्ट अस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। तो नहीं, I इट्स लाइक, will say on पुजारा part. First of all, तो let's come to पुजारा part. जब रोहित ने डिसाइड कर लिया है कि भाई एग्रेसिव वी हैव टू प्ले ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस, एंड आज रोहित ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि वी हैव टू प्ले aggressive on these pitches. We have to play on turning tracks. We like to play on turning tracks, and we need to be brave. और वो एक्चुअली पुजारा से पिस्ड ऑफ था, क्योंकि जब मिड ऑन भी अप कर दिया स्टीव स्मिथ ने, तब भी पुजारा चांसेस नहीं ले रहा था, रिस्क नहीं ले रहा था. दिस इज नॉट द maybe पिच we are being too harsh on Pujara. He played a brilliant knock, definitely equivalent to 100, No, no, but we are still, not I being mean, harsh. It's just cricketing logic. We are, yes. I'm, ठीक है भाई, 59 बनाया हाँ. पुजारा ने. I mean, he was the only one to stand out. But it just gives you 75 run lead. Whereas it could have been a 125 run lead if it was uh, Pujara playing little bit more aggressive, or there was any other player maybe trying to If play that kind of if a game. Shreyas Iyer had played that many balls, the target would have been double 150. We all Yeah, know that. So, yeah. and So हम 2-3 साल से यही बोल रहे हैं कि पुजारा 10 रन में बनाए 100 बॉल पे, लेकिन अगले 100 बॉल पे तो स्ट्राइक रेट सुधारे। और पुजारा ये करता था. द प्रॉब्लम इज पुजारा यूज्ड टू डू दिस व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम फ्रॉम 2010 टू 2018, एंड दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग. पहले उसके डबल हंड्रेड्स आते थे 150, क्योंकि यस, वो इंडिया दो में सेशन, स्पेशली। हाँ, 2 सेशन जब वो डिफेंड करता था तो वो तीसरा सेशन अटैक करता था. बट अभी क्या हो गया है, गेम का एक तो पेस चेंज हो गया है. टेस्ट क्रिकेट इज मूविंग रियली फास्ट, एंड मे बी ही नीड्स टू अडेप्ट हिज गेम अ लिटिल बिट. बिकॉज ठीक है, गैबा और वहां भी उसने नहीं जिताया. उसने बहुत बॉडी ब्लोज खाए, बट वो आउट हो गया गैबा में भी. वो सिडनी में भी आउट हो गया. वो हर जगह आउट हो गया एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश. देर हैज At the नॉट. end of the day, it is runs, and Rishabh Pant has provided us heaps and heaps of runs, which we are not seeing in that Yeah, batting lineup. Rishabh Pant has provided us the runs. Rohit has provided us the runs, and जब ये दोनों नहीं थे लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, रहाणे हैड्स provided us in MCG and in Yes, West yes. Indies. Okay, so Yeah. it's not कि पुजारा ने कुछ 5 साल से टीम चला रहा है. और 59 is not enough. When Khwaja is playing a knock of 60, and Head is batting for 49 today and dominating the spinners, 49 in 53 balls from Travis Head. So I don't think Yeah. we should be overpraising Pujara here, and that's where I feel कि Indian experts don't understand the game at all. I mean, ठीक है, 59 of 142, what a terrific knock, but does it help the team win? Absolutely no. So Head and Labuschagne was absolutely brilliant today. They actually first 10 overs में they were watchful, and उसके बाद once they had their eyes set, they knew कितना ball turn हो रहा है, कितना कोई low bounce हो रहा है. जिस तरह से स्ट्राइकिंग करी, आई रिमेम्बर इट वाज 2 overs में 22 मार दिए थे, एंड उसके बाद दे जस्ट कैरीड ऑन दैट मोमेंटम. So I that feel was that, very good example of positive test batting. Like, yeah, you be watchful for the first few balls of your innings, but then when you're set, your eyes are set, you should just go for the kill. And yeah, it was very good example. And absolutely, yeah, absolutely. And the first innings, I felt कि जब इंडिया को पता चल गया कि the pitch is turning so much, I mean, except for Rohit Sharma, who went a little bit early, except for yeah, him, I first think, over of spinner mein he went down the track. Like, हाँ, who he does went that? down At the least track. watch 1 or 2 overs. But he understood ki pitch turning wala and I have to attack. But I think the rest of the batting lineup didn't understand or did not get the message at all, because they just played defensive strokes, and they just kept Yeah, on playing defensive strokes, except for KS Bharat in the first innings, who smashed a couple of sixes with his slog sweep, and Umesh Yadav yeah, obviously adding 25 valuable runs to a total of 109. Nobody yeah. got the message ki bhai we have to play fast here.
and फैंस just वर रिजॉइसिंग उमेश यादव, एक्चुअली व्हेन उमेश यादव वॉकड इन तभी लोग चिल्लाने लग गए थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि ये पक्का अच्छा and खेलेगा, and पॉजिटिवली खेलेगा। and ये I know हालत है यार हमारी and बैटिंग I की know कि कि उमेश यादव डिफेंस की बैटिंग करके, का वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, एंड आई नो डिफेंस करके तुमने 400 मारा है नागपुर में, ठीक है, तुमने नागपुर में बैटिंग किया, स्लो किया और 400, बट वो पिच डिफरेंट था, दिल्ली का पिच डिफरेंट था, दैट वाज वेरिएबल बाउंस, एंड दिस वाज टर्न। टर्न को आप नहीं खेल सकते डिफेंड कर करके, देयर विल बी वन ऑड बॉल दैट विल आइदर बीट यू ऑन द इनसाइड एज एंड और द आउटसाइड एज। द ओनली अदर वे कुड हैव बीन इफ इंडिया स्वीप शॉट खेलती, वो भी नहीं खेला, थोड़ा भी एग्रेशन नहीं दिखाया इंडिया ने। तो एंड भाई विराट कोहली का क्या करना है, मतलब ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है इतने साल से टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद इसको मौका था कि ये रणजी में एक मैच खेल के जाए सीरीज के पहले, इसने वो भी नहीं किया, और अब लगातार फ्लॉप हो रहा है, बोझ है मिडिल ऑर्डर पे। इसका क्या किया जाए? सरफराज खान जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं इसके वजह से, मतलब रहाणे को पनिशमेंट मिल गई, इसको नहीं मिल सकती क्या? नहीं, विराट को तो नहीं मिल सकता है क्योंकि वो, ठीक है, एक सर्टिफाइड गोट है, जो भी उसने किया है, मतलब आई थिंक probably if there is anyone who deserves to be given so many chances, it has to be Virat Kohli. But I think Virat and Pujara both have really overstayed their welcome, and especially Pujara after that Border Gavaskar Trophy in 2018, which was 5 years back. There has been no special contribution. बस बॉडी पे ब्लोज खाना is not contributing to your team. Okay, you have to actually go आई मीन there यू and यू हैव score ऑलवेज सेड runs नंबर 3 and इज अ win प्लेयर हु matches मूव्स द and इनिंग्स, score hundreds एंड and daddy hundreds. And you don't just कि बॉल खा रहा हूँ और लग रहा है इधर पे इतने घाव है तो मैंने ये कर दिया, भाई that is not how batsmanship is. It's about scoring runs. But भाई anyway, नंबर 3 वैसा था जैसे लबुशेन है ऑस्ट्रेलिया में, कितने हर हर एवरी अदर इनिंग्स में उसका 100 या डैडी 100 होता है। लाबुशेन 1500 रन दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में मारा है, तो आई डोंट थिंक ही कैन बी इवन कंपेयर टू पुजारा, एटलीस्ट इन द लास्ट 5 years. तो एंड आई मीन कोहली का नहीं नहीं, पॉइंट, बॉलर्स के बेसिस पे जीतते हैं, बट हमारे बैट्समैन इतने कॉकी रहते हैं, जैसे तो इनके कंट्रीब्यूशन से हमने सारे होम सीरीज जीते हो। अभी भी अगर इनको थोड़ी अक्ल आ जाए तो इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले आयरलैंड के साथ टेस्ट मैच खेलना चाहिए, या फिर काउंटी टीम के साथ इंग्लैंड में थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये लोग जाएंगे 2 दिन पहले और बोलेंगे कि हम तो रेडी नहीं थे, फिर बाद में या कुछ ना कुछ बहाना देंगे। बट एज अ फैंस वी आर टायर्ड ऑफ लूजिंग फाइनल्स, तो आई रियली वांट इंडियन टीम टू टेक द फाइनल सीरियसली एंड 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 एक्चुअली विन द फोर टेस्ट, एंड देन we'll talk about the final actually. एंड कोहली का पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, नाउ हिज टेस्ट एवरेज हैज ड्रॉप्ड बिलो 50 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द एवरेज अगेंस्ट स्पिन बाय कोहली इज इन द mid 20s. Rohit Sharma is the only player who averages around 40 against spin. Both so Pujara and KL Rahul, it's even lower, matlab the average. So I just want to say कि his play against spin and whenever there is a big turn, I've always found कि अगर Nathan Lyon, Moeen Ali or या Adil Rashid, he often gets out to these kind of bowlers. I think he's the one player who really enjoys going foreign conditions, playing in foreign conditions because he does not like these kind of tracks. साउथ अफ्रीका का जो सीरीज था 2019 में जिसमें उसने 254 बनाया था, दोज वेर नॉट ट्रैक्स लाइक दिस, उसमें देयर वाज बैटिंग असिस्टेंट पिचेस, बट दीज आर प्योरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बॉलर, एंड आई थिंक मुझे याद है लास्ट होम सीरीज जब कोहली ने बहुत हैवी स्कोर किए थे, वो इंग्लैंड 2017 वाली सीरीज थी, पर तब सभी 500 बना रहे थे, इंग्लैंड भी 500 बना के सेकंड इनिंग्स में आउट होके एग्जैक्टली, हार रही थी। वो तो कोहली डिफरेंट को पिचेस टफ थे, पिचेस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली। यस ही वो इज द गोट, बट हाँ, एक स्पिनिंग ट्रैक पे हमको 50 या 100 देखना है, तब जाके थोड़ा। नहीं, वो एक्चुअली डिफरेंट पिचेस थे जो इंग्लैंड 2016 सीरीज में, जिसमें इंग्लैंड इंडिया 600 मार रही थी, फिर इंग्लैंड 400 मार रही थी, भाई मिस फिर होता है, लेकिन ऐसा एक पिच तो देखने मिल जाए, कोई टेस्ट तो 4-5 दिन जाए। एंड मुझे लगता है अहमदाबाद में उनको ऐसा पिच बनाना चाहिए और इंडिया शुड गो फॉर द ड्रॉ। अगर ये पिच वो अहमदाबाद में रिपीट करेंगे, इट कैन बी कि फिर से नेथन लायन कैन आउटबॉल आवर स्पिनर्स, एंड डेफिनेटली नेथन लायन हैज द पेडिग्री टू आउटबॉल आवर स्पिनर्स. सो एंड इंडियन टॉप या ऑर्डर व्हाई नॉट फॉर्म इज ट्राई टू प्रैक्टिस पैथेटिक. फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, थोड़ा फास्ट विकेट देके व्हाई नॉट प्रैक्टिस फॉर इट, और जस्ट एब्सोल्युटली, मेक अ गुड एब्सोल्युटली. बैटिंग ट्रैक टू गिव योर बैट्समैन इन फॉर्म एंड जस्ट प्ले फॉर अ ड्रॉ। या एब्सोल्युटली। uh, I mean, India has to play a little bit more positive. I think the cricketing world has moved forward. Test cricket has definitely moved forward, and teams have realized कि पहले के टाइम में जो था कि there was an
So an experimentation, cricket is going through an experimentation stage right now, and people are testing the waters. Basically, they are seeing whether if we can play this way also by just scoring Hmm. runs, and it's just not about defending anymore. uh, पहले का अभी fitness levels different है. There are many other things. White ball cricket has totally changed. T20 cricket has totally changed the test cricket, and people believe in scoring at least 4 runs per over. So I think it's Yeah. time India adapts to that, and they can't be just defending. There can be two or three batsmen who just defend, but not on these kind of surfaces. You cannot survive here just by defending. You'll eventually get out, and you'll definitely not score a century. If you see Travis Head, the way he played today, that was the perfect blueprint to play on these kind of tracks where you have a positive movement, footwork towards the ball, and just smother the spin, hit it along with the turn, and hit it through the line beautifully. I think that's how the cricket should be played on these surfaces. Anyway, आज ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि इजीली चेस कर लिया, तो देर इज पिच को हम इतना भी ये नहीं बोल सकते हैं. आई थिंक इट Indians were just poor and they need to step up. The top order needs to step up. It's high time, and we have been through a long period of time when top order has not scored. And I think first of all, the team management should stop making just bullshit pitches. जब ऐसा नहीं कि I would say Nagpur pitch was quite good. Delhi again was poor, but this was horrendous pitch, and probably at least make something close to Nagpur pitch, जो कि okay था. And it was only because of Australia's bad batting by the lower order that they lost that match. So I want to have a long game. Let the game go into weekends, because we also need our escapes on Saturday and Sunday. We want to see the game on Saturday, Sunday, and make a pitch that can last. Fast bowlers can have their say. Stark, Mitchell Stark, Umesh Yadav, they can also. उमेश तो भाई कहीं भी वैसे विकेट ले लेता है. इवन दिस मैच ही वाज जस्ट फैंटास्टिक. And let's see some hundreds by the batsmen. Let's hope our batters get in form. At least we need some match form with our batters playing. So I'm hoping for a flatter pitch in Ahmedabad. शामी फिट होगा क्या नेक्स्ट मैच में? Shami तो fit है. I think उसको rest दिया है. He's I think he's fit only. हाँ, तो I'm या hoping he'll play. He and Umesh Yadav. I think it will be a flatter pitch and more paces will play. या पेसी होगा तो टू फास्ट बॉलर्स विल बी गुड. एंड एक प्रीमियम बॉलर को ब्रेक देके कुलदीप को भी खिला सकते हैं, एक प्रीमियम स्पिनर को खिला के ब्रेक देके. तो एक्चुअली जितना साइड स्पिन था इस पिच पे, आई थिंक कुलदीप शुड हैव प्लेड. कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था. वो बहुत सही फायदा उठाता है, जैसे उसने बांग्लादेश में फायदा उठाया था चिटागोंग में. उस तरह का ही पिच था ये भी, और यहाँ पे भी वो और उसके काफी. पहले ऑस्ट्रेलिया में भी फाइफर था, बहुत ज्यादा ओवरलुक किया जाता है. इवन गिल की जगह आई हैड वांटेड टू सी मयंक ओपन, बट वो तो स्क्वाड में भी नहीं है. तो मयंक, विहारी, कुलदीप यादव, ये सब अनलकी प्लेयर्स हैं फॉर्चुनेटली. हम्म. अभिमन्यु ईश्वरन has again scored so many runs in Irani trophy which is going on, so he is also been ignored. but ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखते हैं. बट इंडिया हैज टू गेट rid of Pujara. That's really something that's stopping India to progress स्पेशली इंग्लैंड in में test. उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑलरेडी हम एक लायबिलिटी लेके जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे. आई थिंक रोहित के अप्रोच में जो है कि टर्निंग ट्रैक्स पे और ब्रेव खेलना है, तो वो पुजारा के साथ तो वो फिट नहीं बैठता. इस अप्रोच पे फिट नहीं बैठता. देन यू हैव टू या प्रोबेबली पिक स्काई, और इफ ऋषभ पंत कम्स इन, तो ऋषभ पंत विल प्ले. एंड दैट्स हाउ वी आई रियली मिस्ड हिम दिस टेस्ट मैच. एंड जस्ट एक थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बात करना चाहूंगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बारे में. दे हैड अ वेरी गुड न्यूजीलैंड टूर, आई वुड से, इवन दो सीरीज 1-1 हुई. एंड उसके बाद सडनली बांग्लादेश में जाना, एंड दे आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश इन द वनडेज, जहाँ पे इंडिया सीरीज हारी थी. सो अगर इंडियन प्लेयर्स को लगता है कि वो नंबर वन टीम है, तो नहीं, आई थिंक इट्स इंग्लैंड इन ऑल फॉर्मेट्स. या डेफिनेटली. एंड अभी कुछ क्रिक इन्फो के अवार्ड्स दे रहे थे, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड टू सी द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स एंड द बेस्ट टेस्ट bowling innings and the best test batting परफॉर्मेंसेस में इंडिया के सिर्फ ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर हैं, दोनों साउथ अफ्रीका में. और जॉनी बेस्टो 2 बार नॉमिनेटेड है. ही हैज 2 innings इन हिज नॉमिनेशंस, वंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड वन अगेंस्ट इंडिया.
एंड बाकी भी बहुत सारे नॉमिनेशन है, बट इंडिया के सिर्फ 2 ही हैं. एंड इंग्लिश बॉलर्स, जेम्स एंडरसन इन दैट फिफ्थ टेस्ट वर्सेस इंडिया इज नॉमिनेटेड. Mark Wood is nominated for his bowling in Pakistan, and Ollie Robinson. So 3 bowlers from England are nominated, and even Joshua Da Silva got a nomination. But India के टॉप ऑर्डर में किसी को 2022 में कोई भी इस एक साइकिल का फाइनल मेमोरेबल. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, बट मुझे तो ये साइकिल इंग्लिश क्रिकेट टीम के चेंज के लिए याद रहेगी. एक अलग ही लेगेसी स्टार्ट करी है, एंड आई होप दे कंटिन्यू. सो या डेफिनेटली. एंड लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इंग्लैंड विल बी इन द फ्रे, एंड न्यूजीलैंड विल कम बैक. आई थिंक दे विल बी coming back stronger with Kyle Jamieson getting fit again. They're just waiting. या एंड उनका हमारे bowling. साथ होम सीरीज में न्यूजीलैंड हमको पेलेगी, सही, वो तो कंफर्म्ड है. हाँ. I think that's it for today. Thank you so much, Pratik, for joining. And definitely, let's catch up again and we'll discuss this series, Border Gavaskar Trophy as a whole. But I think the best thing I just wanted to say was said by the great cricketers today. Uh, they said ki when we criticize the pitch and we lose, so Indians call us that we are crybabies because we don't have the skills. But actually, they criticize the pitch today when they won, and Australians should criticize this pitch when they win, just to prove that this is actually is a bad pitch and should not be promoted. Yeah, very hard to learn to bat in these conditions, but they have managed really well in this test. So And I congratulations to can't Australian believe team Travis Head did not start the first test match. in the first test. And Number 4 ranked batsman. all the Australian media which was on fire now are totally quiet, and every former cricketer who was criticizing the Australian team, I think Steve Smith's captaincy, and it was like Justin Langer era again coming back for the Australian team. Yeah. All right. Thank you, Okay, Shikhar. see you. Yeah, bye. I'll Bye. see you soon.